Assalamu alaikum. Welcome to CAT 2 lab second video. In this video, we are going to start with the protrusion menu. And within the protrusions, we will discuss briefly about extrusions, sketching, and cuts. Protrusions are nothing. Protrusions are generated results of any 2D sketches. So if you have a 2D sketch and you generate that sketch along certain path in any direction, so the resultant 3D model or 3D object will be known as technically it is known as a protruded object. So protrusions are nothing. They are the generated results of 2D sketches. So you can generate a 2D sketch in many different ways. One of that methodology is extrusion. What normally you do in extrusion is that if you have a sketch and you generate that sketch perpendicular to the sketching plane, so that resultant object is known as an extruded object. So similarly, if you have a 2D sketch, you can revolve that also. सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जिस तरह आपने AutoCAD में किया होगा, सो वो भी एक प्रोट्रूडेड ऑब्जेक्ट है. So that is another methodology with the help of which you can generate 2D sketch. Similarly, you can have a sweep command, you can have a blend command. So there are so many commands that can be used to extrude or not extrude to generate a 2D sketch basically. So protrusion is the methodology in which you generate a 2D sketch along a defined path, and that path basically then define the type of generation, that what type of protrusion it is. So extrusion is basically a protrusion. So today we will start with the extrusion command. And within the extrusion then we will also cover the sketch command जो कि normally आप sketch में करते हैं. Let us start. We will discuss things within the extrude command. So this is the Pro-E environment. So I will go to the new tab. New tab में you will select the part menu. And sketcher is available. यहाँ पे आप सिर्फ sketches बना सकते हैं, ठीक है. So you can only make sketches and you can save those sketches, and later on in any other module like part module or assembly or drawing, you can recall that sketch and then you can use it for generation or any other option that you are intent for. So basically sketch acts like a block. AutoCAD में आपने blocks किए होंगे. So what do you do in blocks is that if you have a drawing, you have different entities, so you can save those entities or sketches as blocks, and then later on you can insert that block in any drawing. So similarly, sketch will be saved as an independent entity, and then you can insert those sketches in other modules also. So sketch is also available in part, assembly or manufacturing or drawing module. So we will discuss it within the part module. So आप part select करेंगे, यहाँ पे solid का option हम select करेंगे. So we will use a part or a solid which will have a uniform material. लेकिन composite material या sheet metal में हम नहीं जाएंगे. So here you can give the name to that part. By default, it will be part number 1, 2, 3, 4, 5. So I already have 21 parts within my directory. So the next is part number 22, or you can give any name. So I will use the default template, or for example, if you uncheck that, so then it will always ask for the system of units. So let me select the millimeter Newton second system of units. So simply I will click on the OK button. So this is the main interface of the part module, in which you have a coordinate system and you have
three standard planes which you can use for the sketching: front, side, and front, right, or top plane. You know. And you can see over here in the right at the right side, so you have different tabs available, and these tabs are basically grouped in form of similar commands, like for example generate की तरफ आप जाते हैं, यानी extrusion की तरफ या revolution की तरफ या blended की command की तरफ, so you can use this menu. So this is that protrusion menu that we are going to discuss now, and within this menu we will start with the extrude command. So the right first icon is the extrude command. So when you hover the cursor, you place the cursor on any tab, so information regarding that tab appears at that dynamic window that you are seeing, which states that it is an extrude command. And similarly, the other menu that is active is the sketch menu. So this is that sketcher in which you can click on the sketch icon, and then later on the commands related to the sketch will be activated, and then you can make different sketches. और वो commands normally जो AutoCAD में आपने use किए हैं वही commands होंगे. We will have a line command, point command, a rectangle, circle, etc. And these are the references that you can use for sketches or for the modules. Like for example, if in addition to these existing planes, if you want to define your own plane, so you can use this plane option, where you can define your axes, you can define the curves, you can define datum points also. आप एक दूसरा coordinate system भी define कर सकते हैं with reference to some other part. Similarly, measure tool or analysis tool is available which you can use. So as far as the extrude command is concerned, so you can directly click on the extrude and it will directly take you to the extrude menu. अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, so always look to that this area, ठीक है ना. AutoCAD में अगर आपको याद हो, so you have a prompt area beneath the graphical screen. यहाँ पे top tabs के साथ जो है आपका जो message area है वो आएगा, and this area is known as the dashboard area. So all the messages regarding the active command will appear on this dashboard, और dashboard ही आपको guide करेगा कि आपने क्या करना है, ठीक है ना. So if you look at the dashboard, the green arrow indicates that you have to create a sketch, ठीक है ना. So either you can select a sketch or you will make that sketch, ठीक है ना. And then at the main dashboard you will have different icons with reference to the activated command. So right now हमने extrude की command active की है, तो extrude से related जो options आपके पास available हो सकते हैं, so they appear on the dashboard, ठीक है ना. और यहाँ पे tabs में आपको further options फिर मिलेंगे for example options या properties या placement. अब sketch जो है, sketch आपने ज़ाहिर है आपने place करना होगा किसी भी working plane पे, sketching plane पे. So you can make a sketch on the front plane or right plane or top plane. So ये वो placement area है जहाँ पे आपने define करना होगा. So right now we do not have any sketch, so it will ask you to generate the sketch, ठीक है ना. So placement में अगर आप देखें तो this tab, ये heading जो है, it is red in color. So any tab which will be red in color mean that that particular option needs your attention, ठीक है ना. So इसको अगर मैं click करता हूँ, so it is asking for the sketch selection or you can define. So we do not have any sketch. अगर आपके पास sketch already होता तो वहाँ से directly आप select कर सकते हैं उस sketch को. Otherwise you have to define that. So एक तो ये तरीका है कि directly when you click on the extrude command, so the extrude menu will appear, and if you do not have any sketch, so then you have to define that sketch within that. So इसमें अगर मैं define में पे click करता हूँ, ठीक है ना, so then it will take you to the sketch menu. Otherwise अगर for example placement में define में आप नहीं करते तो directly you can click on the sketcher, ठीक है ना. अगर आपको use में फिर आपको पता चल जाएगा तो
स्केच हमारे पास नहीं है, सो आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस स्केच आइकन, ठीक है ना। और सो वही ऑप्शन है जो कि प्लेसमेंट में आपने डिफाइन के थ्रू सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। सो इट अगेन्स हैव टेकन यू टू द स्केच मेनू, और स्केच में आपने ज़ाहिर है स्केचिंग प्लान सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है ना। सो दैट वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो। So let me resume that. So these are the two methods by which you can start your sketch within the extrude command, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है कि डायरेक्टली एक्सट्रूड में आप जाए, और अगर स्केच नहीं है सो यू कैन यूज़ द स्केचर, और वहाँ पे आपने स्केच बनाना होगा। अदरवाइज the most easiest way is to first make the sketch and then use the extrude command, ठीक है ना। So let me start with an independent sketch first, ठीक है ना। So I will make first the sketch and then I will use the extrude command, ठीक है ना। So if I want to go for the sketch, so definitely I will have to select the sketch icon, ठीक है ना। So sketch जो है वो मैं क्लिक कर देता हूँ। So as discussed in the first video, that when you start creating the sketch, so first it will ask you to select the sketching plane and then the reference plane. स्केचिंग प्लेन पे आपका स्केच बनेगा, और जो रेफरेंस प्लेन है वो आपको इसकी ओरिएंटेशन फिक्स करके दे देता है कि हॉरिजॉन्टली आपने फिक्स करना है या वर्टिकली आपने अलाइन करना है, किस साइड के साथ आपने इस स्केचिंग प्लेन को अलाइन करना है, ठीक है ना। सो बेसिकली जो रेफरेंस प्लेन है उससे आप जो आपका जो स्केचिंग प्लेन होगा उसकी रोटेशन आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो एंड यू कैन सी दैट द स्केच प्लेन बॉक्स इज़ एक्टिव, वो ग्रीन कलर में है। तो यहाँ पे अब जो भी आप सिलेक्शन करेंगे दैट विल बिकम द sketching plane, you know. So I will select, let us say, this front plane as the sketching plane. So it will be your sketching plane, and by default it takes that right plane, this right plane as the reference plane, और उसको align कर दिया है right के साथ, ठीक है ना। So ये पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। इसी ओरिएंटेशन में फ्रंट व्यू आपको नज़र आएगी, जिसमें अब आपको नज़र आ रही है सोमेट्रिक व्यू में, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बताया था कि यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस, और आप रिमूव करके कोई भी दूसरा प्लेन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज़ दैट फ्लिपर विच विल गिव यू द पॉजिटिव व्यू एंगल, ठीक है ना। सो वी विल लुक इन टू दिस प्लेन फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, इसी साइड से हम देखेंगे। यू कैन यूज़ दिस फ्लिपर आल्सो, ठीक है ना। रेफरेंस में अगेन जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन थी वही मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। I will select this as my reference plane and I will align this reference plane to the right side, ठीक है। और देन आई विल क्लिक ऑन द स्केच, ठीक है। सो इसी ओरिएंटेशन में आपको जो है वो स्केच मिल जाएगी। नाउ यू कैन यूज़ द स्केच कमांड्स, जो कि आप देख रहे हैं राइट साइड जो स्केचर मेन्यू है वो एक्टिव हो गई है। तो click on these arrows and you will find the sub options regarding the for example लाइन की कमांड है तो स्ट्रेट लाइंस, 2 पॉइंट लाइन आप डिफाइन कर सकते हैं, आप टेंजेंट लाइन डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर लाइन या हिडन लाइन डिफाइन कर सकते हैं। समझिए रेक्टेंगल को अगर आप देखें तो एरो हेड आप क्लिक करते हैं तो यू कैन हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स अवेलेबल। सिमिलरली फॉर द सर्कल, यू नो, सो सेंटर पॉइंट है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 3 पॉइंट है, टेंजेंट सर्कल है। So all these commands are exactly the same as that of the AutoCAD जो कि स्केचर में आप यूज़ करते हैं। So I will not go into the details of these options, ठीक है ना, ये आपको आने चाहिए। However, we will discuss these options one by one in the preceding lectures. जैसे जैसे हम sketches की तरफ और advanced commands की तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर है ये options जो है वो हम यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लाइन से स्टार्ट लेना चाहता हूँ सो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट क्रिएटिंग लाइंस, ठीक है ना, जस्ट बाय क्लिकिंग। देयर इज़ नो नीड ऑफ डिफाइनिंग द XYZ ऑर्डिनेट्स और डायमेंशंस बिकॉज इट इज़ पैरामेट्रिक इन नेचर, और पैरामेट्रिक का फ़ायदा ही यही है, एडवांटेज यही होता है कि यू सिंपली मेक अ रफ स्केच एंड देन यू कैन रिफाइन दैट स्केच थ्रू द डायमेंशंस, ठीक है ना। ठीक
है ना. सो आई विल स्टिल बी इन द स्केच कमांड. जो भी कमांड आप यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल सर्कल का मैं यूज़ करता हूँ, सो आई विल मेक अ सर्कल. एंड देन फॉर एग्जांपल अगर कोई दूसरा सर्कल आप बनाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. ये एक्टिव ही रहेगा, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल यू क्लिक ऑन दिस एरो हेड, ठीक है ना. या आप राइट क्लिक जो है वो करते हैं और escape की आप प्रेस करते हैं या ये एरो हेड आप क्लिक करते हैं. सो इट विल टेक यू आउट ऑफ दिस एक्टिव कमांड, बट स्टिल यू विल बी इन द स्केच, ठीक है ना. यू कैन यूज सम अदर कमांड, फॉर एग्जांपल आर्क आप करते हैं या रेक्टेंगल या लाइन, ठीक है ना. सो जो भी कमांड आप यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज देम. फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कल आप बनाते हैं, सो डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन सम अदर कमांड आल्सो, ठीक है ना. सो लाइन जब मैं क्लिक करूँगा तो it will come out of the circle और line active हो जाएगा, and then you can start creating lines, ठीक है ना. So this is that simple methodology of starting the sketches. So let me uh, delete all the entities. You know, and let me make a rectangle, ठीक है ना. So अच्छा, नॉर्मली इसमें एक ऑब्जेक्ट स्नैप मोड भी होता है, which by default is inactive. And if you want to make, for example अगर आपने ग्रिड ऑन ऑफ करना है तो यू कैन यूज दिस आइकन, ठीक है ना. आपके ग्रिड ऑन ऑफ हो जाएंगे, बट स्नैप इज स्टिल इनएक्टिव, ठीक है ना. स्नैप ऑन ऑफ करने के लिए आपने व्हेन यू आर इन द स्केच मेनू तो सिंपली राइट क्लिक ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना. जब आप राइट क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस का टैब मिल जाएगा. सेकेंड, सो व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑप्शंस, तो यहाँ पे आप जो है स्केच से रिलेटेड जो अपनी सेटिंग है वो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू टर्न ऑन द डिस्प्ले ऑफ द ग्रिड और ऑफ, सो आप चेक अनचेक जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना. सो ग्रिड को अगर मैं चेक करता हूँ सो उसकी विजिबिलिटी जो है वो शो होगी, अदरवाइज इट विल बी हिडन. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो यू हैव अनदर ऑप्शन लाइक स्नैप टू ग्रिड. सो ये वो स्नैप का ऑप्शन है जो कि ऑटोकैड में आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है ना. सो इफ़ यू click on that option, so the cursor will jump from grid one grid point to another grid point, ठीक है ना. सो आपका स्नैप डिस्टेंस जो है सो एग्जैक्टली प्रिसाइज ड्राइंग के लिए अगर आप एग्जैक्टली जो आपका जो स्नैप पॉइंट है ग्रिड का वो आप कैप्चर करना चाहते हैं, सो यू कैन टर्न दिस ऑप्शन ऑन एंड ऑफ. और सिमिलरली मिसलिनियस के साथ साथ यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रेंट का भी ऑप्शन है. तो कॉन्स्टेंट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट यानी हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है, वर्टिकल का है, पैरेलल का है. यू कैन हैव द परपेंडिकुलर ऑप्शन, इक्वल लेंथ ऑप्शन. दीज आर बेसिकली द ऑब्जेक्ट स्नैप मोड्स. अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर इन AutoCAD, so if let us say you have a line and you want to make another line, so normally what happens when you bring the cursor nearer to that line, so normally the end point of the line will be selected or it will pick the midpoint. या अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है तो सर्कल के ऊपर जब आप कर्सर रखते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट जो है वो हाईलाइट हो जाता है. तो यू कैन डायरेक्टली ग्रैब द सर्कल पॉइंट एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल और क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड्स हैं. these are those object snap modes and by default all will be active. तो अगर फॉर एग्जांपल आप लाइन की मिड पॉइंट की तरफ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मिड पॉइंट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा एंड यू कैन इजीली ग्रैब दैट मिड पॉइंट. या फॉर एग्जांपल एंड पॉइंट अगर आप ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप आसानी से जो है वो पिक कर सकते हैं. और यहाँ पे पैरामीटर्स में आप जो ग्रिड स्पेसिंग है उसकी डिस्टेंसेस जो है वो आप यानी ऑटोमेटिक के बजाय इफ़ यू गो फॉर द मैनुअल ऑप्शन, सो एक्स और वाई की स्पेसिंग जो है यू कैन सेट दैट डिस्टेंस. बाय डिफ़ॉल्ट दे आर 30 यूनिट्स, यू नो. सो 30 यूनिट्स एक्स स्पेसिंग है, 30 यूनिट्स जो है वो वाई डायरेक्शन की स्पेसिंग है. और यूनिट्स इसके जो भी आपके ड्राइंग के यूनिट्स होंगे, स्टार्ट में अगर आपको याद हो तो हमने मिलीमीटर का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ठीक है ना.
सो 30 मीन्स 30 मिलीमीटर्स। अगर इंच सिस्टम में आप हैं तो ये फिर 30 इंच होगा। यू नो सिमिलरली एक्यूरेसी जो है वो डायमेंशन की आप सेट कर सकते हैं कितने डिजिट्स तक हो, ठीक है ना, रिलेटिव टू वन, यू नो, सो दैट यू कैन सेट, यू नो, सो यू कैन प्ले अराउंड विद दीज मेन्यूज, ठीक है ना। तो क्या किस तरह आप करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल स्केच आपका एक्टिव है, वी आर इन द स्केचर, ठीक है ना। सो इफ़ यू राइट क्लिक एंड यू गो टू द ऑप्शंस, तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल रेक्टेंगल, ठीक है ना। सो यहाँ पे डायरेक्टली रेक्टेंगल की का जो आइकन है वो मैं क्लिक कर देता हूँ एंड लेट मी स्टार्ट द रेक्टेंगल फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, और एंड पॉइंट रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल जो है मैंने ड्रा कर दिया है। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस एरो हेड, you know, so it will take you out of the current command which was rectangle, and you can see that dimensions have been appear along the entities that you have drawn, ठीक है ना। This is what we mean by parametric, ठीक है ना। So you can change these dimensions now, ठीक है ना। अगर इस डायमेंशन को मैं डबल क्लिक करता हूँ, 120 है सपोज, इफ आई चेंज इट टू 150 और 150, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी अपडेटेड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये 240 है, अगर इसको मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है ना, सो इट विल बी अपडेटेड। So this is what we mean by parametric modeling, that the sketches or the geometries that you will draw, those sketches or geometries will be controlled through the dimensions, ठीक है ना। ये dimension के थ्रू आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। सो यही इसकी सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से यू कैन स्टार्ट द स्केच एनीवेयर विद इन द ग्राफिकल एरिया। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट, यू कैन पिक इट फ्रॉम एनी रेफरेंस, यू नो, सो दैट्स अप टू यू। इसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल एडिशनल डायमेंशन जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं, तो यू कैन ऐड दैम थ्रू दिस डायमेंशन मेनू अवेलेबल है। सो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर वीडियो में कर लेंगे। सो टुडे आई जस्ट वांट टू stay around the default dimensions. So by default जब आप एक entity बनाएंगे तो it will put the minimum requirement on that dimension. For example इस केस में हमारे पास rectangle है, so rectangle बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 डायमेंशन होने चाहिए, ठीक है ना, उसकी लेंथ और उसकी हाइट, ठीक है ना, which are here, so I can change those dimensions. So let it be 300 by 150, you know. So once you are satisfied with your sketch and the dimensions, so simply click on this check mark button, so it will come out of the sketcher, ठीक है ना। तो बाकी ऑप्शन जो है वो हम प्रोसीडिंग वीडियोस में करेंगे इंशाल्लाह, सो मैं डन का चेक मार्क ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देता हूँ, एंड नाउ यू हैव वन स्केच अवेलेबल इन दिस ड्राइंग एरिया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मॉडल ट्री है, it basically gives you the history of all the commands that you will be using, you know. So right now by default जो है हमारे पास एक coordinate system था, which was this one part coordinate system. You had 3 default planes, right plane, top plane और front plane, बाकी कुछ भी नहीं था, you know. And now we have one sketch also, you know, and that sketch is on the front plane, ठीक है ना। So इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूँ, you know, रोटेट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आपका जो मिड माउस बटन है, यानी जो रोलर बटन है, यू नो, प्रेस दैट रोलर बटन, ठीक है ना, उसको आपने प्रेस रखना है, एंड देन व्हेन यू विल ड्रैग द माउस सो इट विल रोटेट द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो ये रोटेशन जो है डायनामिक रोटेशन आपको इस तरह मिल सकती है। अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस हेड्स अप डिस्प्ले मेनू, इन विच यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वीव का टैब है जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड ओरिएंटेशंस है, फ्रंट व्यू। अगर फॉर एग्जांपल इसका मैं फ्रंट व्यू देखना चाहता हूँ तो आई कैन क्लिक ऑन द फ्रंट व्यू, ठीक है ना। सो फ्रंट व्यू जो रेक्टेंगल है वो आपको नज़र आएगा। आइसोमेट्रिक व्यू अगर आप
तो डिफ़ॉल्ट और स्टैंडर्ड व्यू जो है वो आपके आइसोमेट्रिक व्यू बन जाती हैं। सो दिस इज़ दैट आइसोमेट्रिक व्यू, है ना। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रंट प्लेन जो है, दिस प्लेन वाज आवर स्केचिंग प्लेन, ठीक है ना। और आपका रेक्टेंगल जो है वो फ्रंट प्लेन पे बना है, और ये हमारा रेफरेंस था जो राइट प्लेन है, इट इज़ फेसिंग टू द राइट साइड, ये राइट साइड के साथ पैरेलल है। तो ये आपका बेसिकली फ्रंट व्यू जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट प्लेन की ओरिएंटेशन में टॉप व्यू के साथ अलाइन करता, तो फिर कुछ इस तरह की आपके पास रिजल्ट आती है रेक्टेंगल की, ठीक है ना। ये आपका रिजल्ट होता इस ओरिएंटेशन में, ठीक है ना। सो ये रोटेशन बेसिकली आप कंट्रोल करते हैं रेफरेंस प्लेन के थ्रू, ठीक है ना। सो अगेन आई विल सेट इट टू द आइसोमेट्रिक व्यू, जो स्टैंडर्ड व्यू है नॉर्मली। सो ये अब आपका स्केच है जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। एंड नाउ वी हैव अ स्केच अवेलेबल। सो रिवॉल्व की कमांड अगर आप देखें या बाकी बहुत से ऑप्शंस हैं प्रोट्रूजन के, वो एक्टिव हो गए हैं आपके पास। दिस इज़ बिकॉज वी हैव नाउ sketch now, so that sketch can be generated, you know. So we will use the extrude command first. So जब अब मैं extrude पे क्लिक करूँगा, you know, so वही ऑप्शन आपके पास आएगी, you have to select the sketch or you can make a new sketch also. You know, if you do not want to use this sketch for generation and you want to make some other sketch, so always you have that define option, और यहाँ पे स्केचर पे भी आप कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू नो। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेसमेंट की ही एक्टिव मेन्यू है, और आपने स्केच जो है वो सेलेक्ट करना होगा। स्केच सिलेक्शन के लिए डायरेक्टली डायनामिकली आप स्केच को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इफ़ यू प्लेस द कर्सर डायरेक्टली ऑन द स्केच, इट इज़ हाईलाइटेड एंड इट कैन बी सेलेक्टेड। या आप यहाँ पे मॉडल ट्री से कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है ना, सो स्केच उसने पिक जो है वो कर लिया है। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। डायरेक्टली आप स्केच पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये दो ऑप्शंस आपके पास फिलहाल अवेलेबल हैं। यू कैन यूज़ द मॉडल ट्री ऑप्शन और डायनेमिकली यू कैन यूज। अगर आपके पास मल्टीपल स्केचेस हैं और कोई आपने गलती से कोई दूसरा स्केच सेलेक्ट कर दिया है, सो प्लेसमेंट में सिंपली जाके आपने आपके पास जो स्केच है उस पर राइट क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर अनदर sketch selection. So I will select this sketch, ठीक है ना। सो जैसे ही आप स्केच सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोट्रूजन की कमांड हमने यूज़ की है दैट इज़ एक्सट्रूड कमांड। और एक्सट्रूड में मैंने आपको बताया था कि आपकी जनरेशन जो है इट विल बी नॉर्मल टू द स्केचिंग प्लान, ठीक है ना। सो ये आपका स्केचिंग प्लान है, एंड इसकी जनरेशन जो होगी रेक्टेंगल की दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दैट स्केचिंग प्लान इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है ना। सो आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस एरो हेड, ठीक है ना। यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूजन, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक वाइट आपको जो है वो टिक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एक्सट्रूजन के लिए है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो साथ में आपको डायमेंशन भी नज़र आ रही है कि फ़िलहाल एक्सट्रूजन हाइट जो है वो हमारे पास 92 यूनिट्स है। तो इन दिस केस इट इज़ 92 मिलीमीटर, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स मिलीमीटर्स में है, ठीक है ना। तो डायनामिकली आई कैन वेरी दिस एक्सट्रूजन डिस्टेंस, और लेफ़्ट माउस बटन जो है नॉर्मली आप सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो ठीक है ना। सो इफ़ आई ग्रैब दिस चेक बॉक्स और मैं लेफ़्ट माउस बटन जो है वो क्लिक करूँ, होल्ड द left mouse button, and then when you drag the mouse, so you can dynamically change that depth height. Another method for giving the height of extrusion is directly dynamically you can double click this dimension जो 114 आपको नज़र आ रहा है, तो इसको अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे जो भी आप मैं यूनिट्स फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स का मैं करता हूँ 50 मिलीमीटर, ठीक है ना। सो यू अलाउ डेप्थ ऑफ एग्जैक्टली 50 मिलीमीटर। यहाँ पे अगर आप देखें डैशबोर्ड में, तो ये जो आपका है ये डेप्थ ऑफ एक्सट्रूजन की जो टेक्स्ट है वो आपको शो करती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 100 कर दूँ, ठीक है ना,
सो आपका टोटल एक्सट्रूजन हाइट जो है वो 100 होगा. सो यू कैन गिव वैल्यू फॉर द extrusion height or depth dynamically by double clicking the डायमेंशन और हेयर, या आप यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है ना. अगर मैं फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स कर दूँ, सो अगेन इट विल बी 50 यूनिट्स. साइड ऑफ एक्सट्रूजन नॉर्मली अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको पॉजिटिव एक्सट्रूजन मिलेगी. ठीक है ना. ये आपका स्केचिंग प्लान है, फ्रंट प्लेन, और फ्रंट प्लेन से बाहर जो है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी एक्सट्रूजन है, दैट इज़ दैट एक्सट्रूजन हाइट. अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस कर दूँ, जिस तरह ऑटोकैड में आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है ना, सो यू कैन चेंज द एक्सट्रूजन हाइट, या आप एरो हेड जो है वो डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन फर्स्ट गिव पॉजिटिव डायरेक्शन एंड देन सिंपली क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे अगर आप देखें जो टेक्स्ट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है हाइट के साथ, यहाँ पे भी आपके पास फ्लिपर अवेलेबल है. सो यू कैन चेंज दैट डायरेक्शन थ्रू दिस फ्लिपर आल्सो. और यहाँ पे आप वीव कर सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट जो है किस तरह नज़र आएगा. सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे अगर हेड्स ऑन डिस्प्ले में अगर आप देखें तो यू कैन डीएक्टिवेट एनी ऑफ द ऑप्शन. सो फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेन वीव का जो टैब है इसको अगर मैं अनचेक कर दूँ, ठीक है ना, सो जो प्लेन्स आपको नज़र आ रही है वो नज़र नहीं आएगी. सो यू विल ईजिली नाउ बी एबल टू सी द स्केच एंड द रिजल्ट्स. ठीक है ना. अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ सो इसके साथ साथ प्लेन्स भी आपको नज़र आते हैं फॉर द रेफरेंस. ठीक है ना. सो लेट मी टर्न ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द प्लेन्स. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्लिपर आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं. यू कैन चेंज द हाइट ओवर हियर एंड फ्रॉम दिस साइड. यहाँ पे अगर आप देखें तो दो टैब्स आपको नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे. एक जो है वो सॉलिड एक्सट्रूजन के लिए है और दूसरा जो है वो अगर आप देखें तो सरफेस से बनी हुई है. ठीक है ना. सो यू कैन एक्सट्रूड दिस रेक्टेंगल एज अ सरफेस आल्सो. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर मैं विजिबिलिटी देखूँ तो इट हैज़ एक्सट्रूडेड दैट रेक्टेंगल एज अ सॉलिड एंटिटी. ठीक है ना. एज अ सरफेस अगर आप करते हैं तो एज अ सरफेस जो है वो इसको एक्सट्रूड कर देगा. ठीक है ना. सो ये आपको एक सरफेस ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है. ठीक है ना. सो यू कैन ऑलवेज स्विच इन बिटवीन दोज टू ऑप्शंस. और यहाँ पे एंड पे अगर आप देखें तो एक सब आइकन और भी है. अगर आप सरफेस पे जाते हैं, ठीक है ना, सो ये आपका इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है ना. बट व्हेन यू आर इन द सॉलिड मोड, so this menu this icon is available and it is for the thickness. ठीक है ना. so if you want to extrude this as a solid entity, so आप कर सकते हैं as a surface आप कर सकते हैं. you can also extrude this as a thickened object. ठीक है ना. so surface के बजाय अगर आप wall thicknesses define करना चाहते हैं, so your options will be extrude options will be set first to the solid, और solid में फिर आप जो है वो thickness का ऑप्शन जब यूज़ करेंगे, so now you can see that you have an extruded object with certain wall thickness. और वो wall thickness जो है यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थिकनेस से रिलेटेड आपके ऑप्शंस आ जाएंगे. ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं 10 यूनिट्स कर दूँ, ठीक है, सो नाउ आई विल हैव एन एक्सट्रूडेड ऑब्जेक्ट हैविंग अ वॉल थिकनेस ऑफ 10 यूनिट्स. और ये 10 यूनिट्स अगर आप देखें तो इसके साथ भी एक फ्लिपर ऑप्शन अवेलेबल है. तो इसको मैं फ्रंट व्यू पे थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए. यू कैन सी दिस रेड बाउंड्री. ठीक है ना. सो ये रेड बाउंड्री जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली दैट स्केच. ठीक है ना. तो ये स्केच रिप्रेजेंट कर रहा है और इस स्केच को आपने एक्सट्रूड किया हुआ है. ठीक है ना. तो अगर एज अ सॉलिड एक्सट्रूजन है तो आपके पास फुल होगी. अगर आप एज अ सरफेस करते हैं सो इट इज़ एक्सट्रूडेड एज अ सरफेस, और अगर आप थिकन ऑब्जेक्ट करते हैं तो इट इज़ एक्सट्रूडेड एज अ थिकन ऑब्जेक्ट. लेकिन वो थिकनेस जो है वो किस साइड पे डिफाइन होगी, बिकॉज यू हैव अ क्लोज स्केच, दैट थिकनेस कैन बी आउटसाइड द स्केच आल्सो. ठीक है ना. तो अगर ये फ्लिपर में क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, सो यू कैन हैव दैट थिकनेस above outside the
रीजन जो आपने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना. सो इट कैन बी इनसाइड, इट कैन बी कम्प्लीटली आउटसाइड. एंड द थर्ड ऑप्शन इज दैट half of the thickness will be on one side of the sketch, half of the thickness will be to the other side. So for example अगर टोटल 10 यूनिट्स हैं तो 5 यूनिट जो है वो इंटरनल रीजन की तरफ होगी, 5 यूनिट जो है वो एक्सटर्नल की तरफ होगी. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन, ठीक है ना. सो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 यूनिट्स कर दूँ, ठीक है ना, तो 10 यूनिट जो है वो इट विल बी ऑन आइदर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केच, ठीक है ना. सो यू हैव थ्री ऑप्शंस ओवर हियर, completely inside, outside and half off. सो जब आप एक्सट्रूड की कमांड करते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सट्रूजन जो है वो हाइट बढ़ा देता हूँ, ना. सो ये तीन ऑप्शंस जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अवेलेबल होंगे. सरफेस का ऑप्शन है, थिकन का ऑप्शन है और सॉलिड का ऑप्शन है. सो लेट मी डीएक्टिवेट दैट. और सरफेस अगर आप करते हैं तो सरफेस होगा या फिर सॉलिड होगा. ऑप्शंस में अगर आप देखें तो आपके पास ब्लाइंड का ऑप्शन है, डेप्थ का, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. फ़िलहाल ये मैंने डिस्कस नहीं की, ये ब्लाइंड डेप्थ का ऑप्शन जो है, जो एक्सट्रूजन की थिकनेस है, इसके साथ अगर आप देखें तो ये आइकन बना हुआ है, ठीक है ना. एंड यू कैन हैव थ्री डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है ना. फर्स्ट इज़ द ब्लाइंड ऑप्शन, डेप्थ वैल्यू. ब्लाइंड मीन्स ब्लाइंड डेप्थ आप देंगे, यहाँ पे जो भी आप डेप्थ देंगे, सो ब्लाइंडली इट विल बी अप टू दैट पर्टिकुलर. फॉर एग्जांपल 120 यूनिट्स है तो इट विल बी 120 यूनिट्स, ठीक है ना. Similarly, if I use the mid plane option, so like the thickness command, अगर आप mid plane पे करेंगे तो half of extrusion will occur on one side of the sketch, half of extrusion will occur on the other side of the sketch. Yeah. So this is another option that you can use for extrusion height. And similarly, the last one is the up to certain boundary, and that boundary can be an entity, it can be another solid body, it can be a point, it can be a surface. So right now we do not have any other objects, so I cannot use this option. ये हम बाद में करेंगे. सो अगर यहाँ पे आप कर भी दे तो इट विल आस्क यू टू सेलेक्ट दैट बाउंड्री, जो कि हमारे पास नहीं है, तो मैं यूज़ नहीं कर सकता फिलहाल. तो ब्लाइंड में आप ब्लाइंड डेप्थ देंगे, यहाँ पे भी आप ब्लाइंड डेप्थ ही देंगे, बट हाफ जो है वो एक साइड पे होगा स्केच की, हाफ जो है वो दूसरी साइड पे होगा. और इससे थोड़े से एडवांस लेवल पे ऑप्शंस जो आपको, यानी दोनों साइड के ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, तो इसको मैं फ़िलहाल ब्लाइंड पे कर देता हूँ, ठीक है. सो व्हेन यू गो टू द ऑप्शन टैब, ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं, सो डेप्थ का ही ऑप्शन है आपके पास. सो यहाँ पे दोनों साइड पे आप इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर सकते हैं. यानी फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट साइड पे अगर आप देखें तो मैंने ब्लाइंड का ऑप्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना. सिमेट्रिक का अगर आप करते हैं तो ये साइड टू वाला ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज सिमेट्रिक मीन्स कि हाफ जो है वो एक साइड पे होगी, हाफ जो है वो दूसरी साइड पे होगी, ठीक है ना. एंड दैट मेजरमेंट विल बी डिपेंडेंट अपॉन दिस वैल्यू के. ये आप जितने भी फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स है तो 50 एक साइड पे होगी, 50 जो है वो दूसरी साइड पे होगी. दूसरा आपके पास ब्लाइंड ऑप्शन है, तो 100 यूनिट्स है, सो इट इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्केच. अगर साइड टू जो है वो आप सेलेक्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी सेट टू नन, है ना. तो इसको अगर मैं लड़ा से इसको भी मैं ब्लाइंड पे कर दूँ, है ना, और यहाँ पे मैं लड़ा से 30 यूनिट्स कर दूँ, ठीक है. नाउ आई हैव एन एक्सट्रूजन ऑफ दिस स्केच ऑन आइदर साइड, बट एक साइड पे जो है वो 100 यूनिट्स डेप्थ है और दूसरी साइड पे जो है वो 30 यूनिट्स है. सो यू कैन गिव different extrusion heights or depths on both sides of the sketch जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना. एंड इफ़ यू क्लिक इट टू द नन, ठीक है ना, सो वही जो डिफ़ॉल्ट नॉर्मली आपके पास होती है तो वो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे. सो दीज आर द सिंपल कमांड है एक्सट्रूड की. यू विल हैव स्केच, और वो स्केच अगर आप परपेंडिकुलर टू द स्केचिंग प्लेन एक्सट्रूड करना चाहें, तो जनरेट करना चाहें, तो आप एक्सट्रूड की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं. क्लिक ऑन दैट और इसको मैं चेक करके जो है वो आपका रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सो
Uh, Now if you want to change this result, ठीक है ना, तो अगर मैं इस एक्सट्रूडेड ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, इफ़ आई सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, सो डायमेंशन ऑफ दैट बॉडी विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। और डायमेंशंस अगर आप देखें तो एक तो रेक्टेंगल की डायमेंशन है जो कि उसकी लेंथ और हाइट थी, और दूसरी आपके पास एक्सट्रूजन डेप्थ है। सो इफ़ आई डबल क्लिक ऑन एनी ऑफ द डायमेंशन और इसको मैं डायनामिकली चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स, आई कैन चेंज दैट, ठीक है ना। 50 यूनिट्स है, और जब मैं रीजनरेट करूँगा, ये आपका रीजनरेट का या रीपेंट का ऑप्शन है, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है ना, रीजनरेट। सो आपका जो डायमेंशन है और उसका जो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडल में यू विल प्ले विद द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर नथिंग, पैरामीटर्स आर द डायमेंशंस, ठीक है ना। सो सिंपली डबल क्लिक करें और जो भी डायमेंशन आप सेलेक्ट करते हैं यू कैन चेंज दैट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 200 कर दूँ, ठीक है ना, सो आपका और रीजनरेट आप कर दें, so the geometry will be updated. Another method of editing an existing solid is that कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस स्केच को अगर मैं एडिट करना चाहूँ, तो यहाँ पे मॉडल ट्री में आपके पास स्केच अवेलेबल है, तो यू कैन सेलेक्ट दैट स्केच, राइट माउस बटन जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस विल अपीयर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो डायनामिक एडिट का ऑप्शन है और एडिट का ऑप्शन है, बोथ आर द सेम। डायनामिक एडिट का वही है, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास डायमेंशंस आ जाती हैं डायनेमिकली स्क्रीन पे, एंड यू कैन पिक एनी डायमेंशन और वहाँ पे आप चेंज कर लेंगे। सिमिलरली फॉर द एडिट मेनू, सो राइट क्लिक, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल इस ज्योमेट्री की डेफिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू एडिट डेफिनेशन, so you it will take you to बैक टू द स्केच मोड, और आप पूरा का पूरा स्केच अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं फॉर एग्जांपल एक दूसरा स्केच लेटर से ऐड करना चाहूँ, एक सर्कल ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, और एक दूसरा रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। सो नॉर्मली आपके पास कैट सॉफ्टवेयर में अगर इस तरह के कोई स्केचेस है, ठीक है ना, सो इफ़ आई कंप्लीट द स्केच, सो मैं एरो हेड जो है वो क्लिक कर दूंगा तो कोई दूसरा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज वीक डायमेंशंस अगेन अपीयर ऑन दोज न्यू एंटिटीज़, और ये डायमेंशन क्लिक करके जो है वो आप चेंज कर सकते हैं किसी भी अपनी जो भी आपके डिज़ायर्ड डायमेंशन होंगे। बात मैं ये कर रहा था कि अगर ऐसा कोई स्केच आपके पास है, इफ़ यू हैव लाइक अ स्केच विद इन अ स्केच, सो नॉर्मली इसको जब आप जनरेट करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल वो जनरेट करता है जो आउटर रेक्टेंगल है, तो ये तो एज अ पूरी सॉलिड बॉडी जनरेट हो जाएगी। और साथ में ये रेक्टेंगल है, तो ये भी अगर आप जनरेट करेंगे तो ये भी सॉलिड ही होगा, तो कोई इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। बट नॉर्मली कैट सिस्टम में इस तरह के अगर कोई फिगर है कि एक क्लोज्ड एंटिटी के अंदर कोई दूसरी क्लोज्ड एंटिटी हो, नॉर्मली इट विल टेक द फर्स्ट द आउटर रीजन फॉर जनरेशन, और जो सेकंड रीजन है वो उससे सब्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई दूसरा स्केच मेरे पास है, तो दैट स्केच विल बी कंसिडर फॉर जनरेशन, और ये जो है आपका सब फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ, लेटर से इसको मैं ओके कर देता हूँ। सो आई हैव अपडेटेड द स्केच नाउ, एंड यू कैन सी कि स्केच नंबर 1 आपने अपडेट किया हुआ है। और एक्सट्रूड 1 को अगर आप देखें मॉडल ट्री में, तो इसको जो प्लस आइकन है इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, सो दिस एक्सट्रूजन इज़ बेसिकली द रिजल्ट ऑफ स्केच नंबर 1। सो स्केच नंबर 1 जब आप अपडेट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अपडेट होगा, वो स्केच जहाँ पे भी आपने यूज़ किया होगा ऑटोमेटिकली इट विल बी अपडेटेड। सो दिस इज़ दोज एडवांटेजेस ऑफ पैरामेट्रिक मॉडलिंग, which makes it very convenient for the user to
मेक कम्प्लेक्स शेप्स, ठीक है ना। सो अगर आपके पास एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो सिंपली उसका स्केच अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट और या वो उसके उसकी जहाँ पे भी एप्लीकेशन होगी वो सब की सब आपके पास अपडेट हो जाएंगी। तो अगेन इफ़ आई फॉर एग्ज़ाम्पल राइट क्लिक ऑन द स्केच और इसका जो एडिट डेफिनेशन मोड है वहाँ पे मैं दोबारा चला जाऊँ, यू नो, और फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई मेक अनदर सर्कल विद इन दिस रेक्टेंगल, फिर आपका क्या होगा। सो नाउ इट विल बी कंसिडर फॉर जनरेशन। सो मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आई वांटेड टू communicate to you is that normally for generation it will take the first boundary for generation, it will exclude the second boundary, it will इंक्लूड द थर्ड बाउंड्री, अगर इस बाउंड्री के अंदर कोई दूसरा स्केच हो वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली कैट फॉर्म के जो जनरेशन मेथोडोलॉजीज़ हैं वहाँ पे आपके पास ये होंगी। सो लेट मी अगेन गो बैक टू द एडिट डेफिनेशन मोड, और जो एडिशनल स्केचेस हैं अगर उनको मैं अगेन डिलीट कर दूँ, ठीक है ना, सर्कल फॉर एग्जांपल है आपके पास, ओके, ठीक है ना। तो दिस विल बी योर रिजल्ट। एंड सिमिलरली यू कैन गो टू द एक्सट्रूड आल्सो। एक्सट्रूड पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यू कैन गो टू द डायनामिक एडिट, वही ऑप्शन है आपके पास, डायमेंशन आ जाएंगी, डायनामिकली यू कैन एडिट दोज ऑप्शंस, और if I right click and then go back to the edit definition mode, so completely अगर इसका definition आप change करना चाहते हैं तो you can use that right click option also, you know, so it will bring you back to the definition of that extruded object। और यहाँ पे आप जो है वो extrusion से related जो options है, अगर for example इसको मैं as a thickened object जो है वो extrude करना चाहूँ, ठीक है ना, so ये आपका फिर result होगा इस form में, ठीक है ना। So this is how you can make, you can go for solid extrusions and editing of those solid extrusion, you know। So second option जो है मैं inactive कर देता हूँ। सो एक्सट्रूड की कमांड जो है वो एक सिंपल कमांड है, होपफुली यू विल बी नाउ एबल टू मेक एनी टाइप ऑफ एक्सट्रूजन। सो लेट मी क्विकली गो फॉर अनदर स्केच और उसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। सो एक्सट्रूड के साथ साथ जो है वो कट का भी ऑप्शन जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि हम एक्सट्रूजन्स करेंगे, स्केचिंग करेंगे और कट्स करेंगे, ठीक है ना। सो स्केच में आप स्केचिंग करते हैं, एक्सट्रूजन में आप उस स्केच को एक्सट्रूड करेंगे, और लेट अस से इफ़ यू हैव एन एक्सट्रूडेड ऑब्जेक्ट और वहाँ पे कोई स्केच बना के आप उससे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कट का ऑप्शन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ आई go back to, let us say, the Pro environment, let me make a rectangular object and then subtract it from this existing one, ठीक है ना। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्केच में जाता हूँ, ठीक है ना, ये तो हमने कर दिया है कि पहले आप स्केच बनाएंगे और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्टली आप एक्सट्रूड में जाना चाहते हैं, ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। Let us first stick ourselves to independent sketches, you know? So if I want to make another sketch, so I will simply click on the sketch icon, you know? यहाँ पे sketching plane आप select करेंगे, so let me select this plane as my sketching plane, ठीक है ना। एक तो ऑलरेडी आपके पास ये planes है, तो डिफ़ॉल्ट प्लेन्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एडिशनल प्लेन्स भी डिफाइन कर सकते हैं, आप सरफेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ प्लेन। सो नाउ आई हैव मल्टीपल सरफेसेस ऑफ दिस ब्लॉक, आई कैन यूज एनी सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक एज फॉर स्केचिंग, यू नो। सो सपोज इफ आई पिक दिस एज माई स्केचिंग प्लेन, और बाय डिफ़ॉल्ट उसने कोई दूसरी सरफेस जो है वो ले ली है और उसको अलाइन कर दिया है राइट के साथ, सो आई विल रिमूव दैट। सो अब ये सरफेस जो है ये स्केचिंग प्लेन होगा, ठीक है ना। सो जो भी आप स्केच बनाएंगे इट विल बी क्रिएटेड ऑन दिस पार्टिकुलर फेस, और ये आपका वो पॉजिटिव व्यू डायरेक्शन है, यानी इस साइड से ही आप इसको पॉजिटिव व्यू आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। यू कैन यूज़ ऑलवेज दिस फ्लिपर, या तो यहाँ से या यहाँ पे आप क्लिक करके जो है वो कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये साइड ले लूँ, ठीक है ना, दिस वन एज माई रेफरेंस साइड, और इसको अगर मैं अलाइन कर दूँ लेटर से इस लेफ्ट साइड के साथ ही, ठीक है ना, सो ये इसी ओरिएंटेशन में जो है आपका ब्लॉक आ जाएगा। ये आपको फेस करेगा और ये साइड जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस वन, ठीक है ना। सो ये इसी ओरिएंटेशन में लुक एट द रोटेशन ऑफ दिस ब्लॉक। जब मैं स्केच आइकन पे क्लिक करूँगा तो इट विल रीओरिएंट दैट ब्लॉक इन दिस ऑप्शन, ठीक है ना। सो ये वो आपका स्केचिंग प्लेन है और ये आपने रेफरेंस प्लेन लिया है और उसको मैंने अलाइन कर दिया है लेफ्ट साइड ऑफ द मॉनिटर के साथ, ठीक है ना। सो अगर आप किसी भी व्यू में हो और स्केच में आप स्केच व्यू में जाना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आइकन जो है दिस इज़ फॉर द स्केच व्यू, ठीक है ना। स्केच व्यू क्या होता है कि स्केच व्यू में नॉर्मली आपकी स्केचिंग प्लेन जो है दैट बिकम्स पैरेलल टू द स्क्रीन या नॉर्मल टू यू, सो दिस वन। ये सॉलिड मोड में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये डिफरेंट विजिबिलिटी ऑप्शंस है। आप शेडेड व्यू में आपको नज़र आ रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल हिडन लाइन में आप देखना चाहते हैं या फॉर एग्जांपल वायर फ्रेम मॉडल देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये वायर फ्रेम में आपको नज़र आएगा। सो दिस इज़ फॉर योर ईज़। ये भी वायर फ्रेम है लेकिन हिडन लाइन जो है वो आपकी फेंटेड कलर की होंगी, ठीक है ना। इसमें जो हिडन लाइंस हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी, नो हिडन लाइंस। अगर शेडेड व्यू में आप करना चाहते हैं तो शेडेड व्यू में, या अगर फॉर एग्जांपल इन्हेंस्ड रेंडर व्यू में आप देखना चाहते हैं तो इस व्यू में भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इट्स अप टू यू कि किस तरह आप यूज़ करते हैं। सो लेट मी यूज़ द शेडिंग ऑप्शन और मैं स्केच ओरिएंटेशन पे जब क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ जाएगा। लेट मी मेक rectangle. For example, मैं एक rectangle बनाता हूँ, ठीक है ना। Suppose I want to start the rectangle from the end point of this, और यहाँ से यहाँ तक मैंने rectangle बना दिया है, ठीक है। So ये वो आपका rectangle है जो कि इस साइड पे बन रहा है और फिलहाल मैं एक rectangle ही बना के इसको चेक बॉक्स में वो कर देता हूँ। Now if I click on the extrude option again और मैं ये स्केच 2 सेलेक्ट कर दूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे मॉडल ट्री से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप यहाँ पे डायनेमिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ आई सेलेक्ट दिस स्केच 2, सो नॉर्मली एक्सट्रूड हमने अभी जितने भी ऑप्शन किए हैं वही ऑप्शंस आपके पास होंगे। प्लेसमेंट में आपने सेलेक्ट कर दिया है स्केच नंबर 2, ठीक है ना, एंड देन you can use the options related to the extrude command, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लिपर अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे अगर आप यूज़ करें तो ये व्यू आपको नज़र आएगी। अगर लड़े से आप उस साइड की तरफ करते हैं तो एक सॉलिड ब्लॉक ही नज़र आएगा। सो यू विल हैव अ सॉलिड विद इन अ सॉलिड, कोई इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इफ़ यू हैव एन एक्सट्रूडेड ऑब्जेक्ट और फिर सेकंड टाइम आप एक्सट्रूड की कमांड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें यू हैव वन एडिशनल आइकन अवेलेबल विच इज़ दिस वन, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस में इनएक्टिव था एंड दिस वाज बिकॉज एट दैट टाइम वी डिडंट हैव एनी सॉलिड बॉडी। अब हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सो दिस आइकन इज़ अवेलेबल एंड इट इज़ द कट ऑप्शन, ठीक है ना, रिमूव मटेरियल। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये एक्टिव करता हूँ सो बेसिकली इट विल बी एक्सट्रूडेड एंड इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सॉलिड, ठीक है ना। सो अब ये बाहर की तरफ निकल रहा है सो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इफ़ आई चेंज द डेप्थ ऑफ एक्सट्रूजन दिस वन एंड यू हैव 2 एरोज अवेलेबल, ठीक है ना। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट व्हाट विच रीजन यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। यानी इस ब्लॉक का जो इंटरनल रीजन है वो आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या एक्सटर्नल रीजन आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अगर इंटरनल रीजन आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये रिजल्ट होगा, ठीक है ना। सो यू हैव अ रेक्टेंगल एंड इंटरनल रीजन ऑफ दैट रेक्टेंगल विल बी रिमूव्ड और जितना रिमूव होगा दैट विल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, ठीक है ना, जो कि आप यहाँ पे देंगे हाइट। इन फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 यूनिट्स कर दूँ, ठीक है ना, सो 100 यूनिट डेप्थ ऑफ एक्सट्रूजन होगी, और इंटरनल रीजन विल बी रिमूव। इफ़ आई चेंज दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, सो यहाँ पे फ्लिपर अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे अगर आप यूज़ करें तो ये व्यू आपको नज़र आएगी। अगर लड़े से आप उस साइड की तरफ करते हैं तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल
है ना, और आप यूज करें तो इसका जो एक्सटर्नल रीजन है वो सब्ट्रैक्ट होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द कट कमांड. सो कट का भी सिंपल ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं. सो यू हैव द फ्लिपर डायरेक्शन अवेलेबल. ठीक है ना, यहाँ आप फ्लिपर यहाँ पे या एरो हेड पे डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं. सो मल्टीपल वेज हैं ऑप्शंस के जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. So let me remove the internal side of the generated object. So ये आपका generated block होगा और ये completely remove होगा already एक existing icon से. ठीक है ना. So ये आपके पास extrude cut का option जो है वो आ गया. So that's it for this lecture. Let me show you the Creo environment also. ठीक है ना. सो अगर किसी के पास क्रियो है, अगर फॉर एग्जांपल वो यूज़ करना चाहते हैं तो क्रियो जब आप ओपन करेंगे सो ये क्रियो का इन्वायरमेंट है. सो सिमिलरली इफ़ आई क्लिक ऑन द न्यू टैब, यहाँ पे वही ऑप्शन है जो कि प्रोई में मैंने आपको बताया. सो आपके पास स्केच का है पार्ट असेंबली. आई विल सेलेक्ट द पार्ट मेनू और सॉलिड सेलेक्ट करूँगा. यहाँ पे आप पार्ट नाम दे सकते हैं. आई विल यूज़ द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लेट अस से. ओके मैं कर दूंगा. सो मेन इंटरफेस अगर आप देखें तो यू हैव द सेम इंटरफेस अवेलेबल. आपके पास मॉडल ट्री है. मॉडल ट्री में आपके पास राइट टॉप फ्रंट प्लेन है और कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये वो हेड्स ऑन डिस्प्ले हैं जो कि क्रियो में टैब्स में आपके पास अवेलेबल थी. क्रियो में आपके पास जो प्रोट्रूजन मेनू थी या जो स्केच की मेनू थी वो इट वाज अवेलेबल एट द राइट साइड. यहाँ पे आपके पास टॉप में ग्रुप्स की फॉर्म में अवेलेबल है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑपरेशंस है, ये रीजनरेट का जो ऑप्शन मैंने यूज़ किया था वो यहाँ पे है. ऑप्शंस में अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस की कमांड होंगी. गेट डेटा में अगर आप एक्सटर्नल रेफरेंस जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं. डेटम प्लेन का मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड पे यहाँ इस साइड पे जो स्केच की मेनू थी और स्केच के साथ जो डेटम प्लेन्स या एक्सेस का ऑप्शन था वो अवेलेबल है. यहाँ पे वो प्रोट्रूजन की मेन्यू है, एक्सट्रूड की है, रिवॉल्व, ब्लेंड, शेप्स जो भी आप ये सारे हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह. सिमिलरली यहाँ पे एडिटिंग के ऑप्शन है विच आर राइट नाउ इनएक्टिव बिकॉज वी डू नॉट हैव एनीथिंग दैट कुड बी एडिटेड. सो जब आपके पास स्केच या मॉडल होगा तो ये मेन्यू जो है वो एक्टिव होगी उस केस में. सो लेट मी डू द सेम प्रोसीजर ओवर हेयर जो कि अभी हमने प्रूवी में किया. तो एक्सप्लेन में नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो गई है. बट आई जस्ट वांट टू शो यू द लिटिल बिट डिफरेंसेस ऑफ दिस टू सिस्टम्स. अगर क्रियो किसी के पास है तो दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन. अभी क्रियो 7 मेरे ख्याल में आ रहा है. सो फिलहाल क्रियो 6 जो है वो लेटेस्ट वर्जन ही है. सो अगर एक्सट्रूड आप करते हैं तो आप एक्सट्रूड से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं और ये स्केच का प्लेसमेंट में जिस तरह मैंने आपको बताया तो स्केच आपने डिफाइन करना होगा. अदरवाइज अगेन यू कैन स्टार्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ स्केच. सो इफ़ आई क्लिक ऑन द स्केच मेनू स्केचर आइकन तो यहाँ पे वही ऑप्शन है. यू हैव टू सेलेक्ट द स्केचिंग प्लेन. So let me select this front plane as the sketching plane. वही व्यू पॉजिटिव व्यू डायरेक्शन है. रेफरेंस प्लेन आपने सेलेक्ट करना होगा. फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट दिस एज द रेफरेंस प्लेन और इसको मैं अलाइन करता हूँ जो डिफ़ॉल्ट है अगेन राइट. सो ये वो सारी ऑप्शंस हैं जो कि प्रो ई में आप करते हैं. एंड सिंपली क्लिक ऑन द स्केच. सो ऑटोमेटिकली इट विल रीओरिएंट द वर्किंग प्लेन्स और द स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन. वो स्केच व्यू में जो है वो आपके पास आ जाएगा. और लेटर ऑन देन यू कैन स्टार्ट स्केचिंग थिंग्स. सो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरे ओरिएंटेशन में और स्केच मोड में है एंड यू वांट टू मेक योर स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन तो हेड्स ऑन डिस्प्ले में अगर आप देखें तो ये आइकन जो प्रोवी में था यहाँ पे भी अवेलेबल है स्केच व्यू का. सो स्केच व्यू जब भी आप क्लिक करेंगे तो इट विल ब्रिंग यू बैक टू दैट डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ द स्केच. बाज़ केसेस में ये भी हो सकता है कि
जब आप स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इट विल नॉट रीओरिएंट these planes to the sketching plane. This might be because of the default options. उसमें ये है ऑप्शंस में कि जब ये है वो आपके ऑप्शंस, तो आपने ऑप्शंस में जाना होगा और ऑप्शंस में यहाँ पे दोबारा मैं बता देता हूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। नॉर्मली जब आप स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट कर देते हैं तो इट ऑटोमेटिकली रीओरिएंट्स द स्केचिंग प्लेन लाइक दिस, है ना। इट मेक द स्केचिंग प्लेन बेसिकली पैरेलल टू द स्क्रीन। हो सकता है कि आपके केस में जो वो रीओरिएंट ना करे, आइसोमेट्रिक व्यू में ही रहे वो, ठीक है ना। लेट मी चेंज द व्यू टू आइसोमेट्रिक, है ना। हो सकता है कि यही व्यू आपकी रहे। स्टिल यू कैन मेक थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्कल बनाना चाहूँ, यू नो, सो इट विल मेक दैट सर्कल ऑन दैट particular sketching plane which you have selected, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात जो है वो कभी कभी पॉइंट्स सिलेक्शन में जो है वो आपको पास एरर्स आ सकते हैं, सो डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। तो अगर आपका ये स्केच ओरिएंटेशन का व्यू जो है वो ओरिएंट नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली, तो एक तो ये कि आप यहाँ से कर सकते हैं कि स्केच, बट इट विल बी अगेन डिफ़िकल्ट कि हर बार जब आप स्केच में जाएंगे सो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्केच व्यू और उसके बाद आप स्केच जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली ये जो है ऑप्शंस में आपके पास मिलती है, ठीक है। सो इफ़ यू गो टू द फाइल और फाइल में आप ऑप्शंस में जाते हैं तो ऑप्शंस में यहाँ पे एक स्केचर का ऑप्शन है विच इज़ दिस वन, ठीक है ना। सो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस स्केचर, सो स्केचर से रिलेटेड जो ऑप्शंस है, यानी जो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड मैंने आपको बताया था प्रोई में, वो आप एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव ही रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे so you will find an option of the sketcher startup, ठीक है ना। sketcher startup में अगर आप देखें तो ये ऑप्शन है make the sketching plane parallel to the screen, ठीक है ना। this is the default orientation, this will be the default orientation। ये चेक ही होगा। अगर इन केस अनचेक है, अगर अनचेक होगा so it will not reorient that sketching plane। सो आपने फिर सिंपली ऑप्शंस में जाके स्केचर में आप जाए एंड सिंपली चेक दिस ऑप्शन। सो ओके जब आप करेंगे, यस, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन मेनू में आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो सो इट विल देन ऑलवेज रीओरिएंट द स्केचिंग प्लेन टू दिस व्यू, ठीक है ना। इसी व्यू में आपको नज़र आएगा। बाकी वही ऑप्शंस है, यानी फॉर एग्जांपल अगर वही फिगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे भी, जो कि हमने प्रोई में भी बनाया। फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन द रेक्टेंगल, यहाँ से मैं यहाँ तक लड़े से एक रेक्टेंगल बनाऊँ, ठीक है। ओके जब आप करेंगे, ठीक है ना, सो इट विल कम आउट ऑफ द स्केचर और आप कोई दूसरी कमांड फिर यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ सम अदर कमांड विद इन द स्केचर, सो फिर या डायरेक्टली आप सर्कल में जाके या रेक्टेंगल में आप एक्टिव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वो एरो हेड है जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। सो इफ़ यू क्लिक ऑन दैट, so it will come out of the existing option or command of the sketch, but still the sketcher will be active। sketcher अभी active ही है, ठीक है ना। so you can make additional sketches जब तक आप ये ग्रीन चेक मार्क जो है वो क्लिक नहीं करेंगे। सो इफ आई क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑल दीज आर दोज, यानी जो मिड पॉइंट का या टेंजेंट का जो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड का ऑप्शन है वो रेडिली अवेलेबल होता है, आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप देखें तो डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, सो यू कैन यूज़ दोज डिस्प्ले ऑप्शंस आल्सो। सो आई विल क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके अगर मैं कर दूँ, ठीक है ना, इसको मैं दोबारा रीओरिएंट कर देता हूँ, ठीक है ना। लेट मी टर्न ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द प्लेन्स, ठीक है ना। सो ये मैं प्लेन्स जो है वो इनएक्टिव कर दूँ, ठीक है ना।
तो यहाँ से आप डेटम प्लेन, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपको नज़र ना आए, सो सिंपली यू कैन अनहाइड दिस आल्सो, ठीक है ना। तो ये विजिबिलिटी के ऑप्शन है, हेड्स ऑन डिस्प्ले में आप जो है सारी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नाउ अच्छा, प्रोई में मैंने आपको नहीं बताया कि अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आपका स्केच सेलेक्टेड है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट दिस स्केच प्रायर टू द एक्सट्रूड और सम अदर कमांड, और उसके बाद आप कमांड एक्टिव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वही स्केच जो है वो आपका वो ले लेगा, पिक कर लेगा एक्सट्रूजन के लिए। अदरवाइज अगर कोई स्केच आपने सेलेक्ट नहीं किया एंड फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन द एक्सट्रूड कमांड, तो प्लेसमेंट में आपने फिर वही सिलेक्शन या आपने डिफाइन करना होगा। सो लेट मी सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल, वही ऑप्शंस हैं जो कि नॉर्मली एक्सट्रूड में मैंने सारा, ठीक है ना, आपको समझाया। तो प्लेसमेंट में ऑप्शंस में वही दो ऑप्शंस आपके पास होंगे, साइड 1 का, साइड 2 का, ठीक है ना। इसमें एक एडिशनल ऑप्शन है टेपर का, कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो टेपर्ड एक्सट्रूजन चाहते हैं, तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस एंगल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 30 डिग्री कर दूं, ठीक है ना, सो it will extrude that particular entity, but not only extrude, it will also uh, give a tapered angle to that extrusion, और वो taper angle जो है वो जो भी आप देंगे वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो दूसरी तरफ जाते हैं, तो उस साइड पे आपका टेपर एंगल जो है वो बन जाएगा, यू नो। सो दिस इज़ दैट एडिशनल ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल। एक एडिशनल ऑप्शन जो है इसमें एक और भी है कैप एंड्स का। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल डेप्थ ऑफ एक्सट्रूजन जो है वो थोड़ा सा कम कर दूँ, तो नॉर्मली ये कैप एंड्स का मैं अभी आपको समझाता हूँ। लेट मी फर्स्ट डिस्कस द मेन, ठीक है ना। सो इसमें विजिबिलिटी में भी ऑप्शंस है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको एंड रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो यू कैन सी दैट, यू कैन रिज्यूम दैट, ठीक है ना। अगर आप ट्रांसपेरेंट व्यू जो है वो देखना चाहते हैं, तो इट विल शो यू द ट्रांसपेरेंट व्यू, ठीक है ना। सो ये सारे ऑप्शंस है। तो स्टैंडर्ड सॉलिड व्यू या ट्रांसपेरेंट व्यू जो है वो आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, तो सॉलिड का ऑप्शन है, सॉलिड में थिकनेस का ऑप्शन है, ठीक है ना। सो यू कैन गिव दोस थिकनेस जो आपने डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स अगर आप करते हैं, एंड देन यू कैन चेंज द द साइड्स ऑफ थिकनेस आल्सो, आइदर टू द वन साइड और द अदर साइड, या हाफ हाफ वाला। ये डेप्थ ऑप्शंस है, ठीक है। सेम सॉलिड के बजाय अगर आप सरफेस की तरफ जाते हैं, सो नॉर्मली ये कैप एंड्स वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल एज अ सरफेस आप एक्सट्रूड करते हैं, सो नॉर्मली ये आपका सरफेस ऑब्जेक्ट होगा, और जो ओपन एंड्स है वो भी आप क्लोज कर सकते हैं सरफेस में कैप एंड का ऑप्शन यूज़ करते हुए, ठीक है। सो अगर कैप एंड का ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ, so it will close the open faces also, still it will be hollow from inside। ये एक सरफेस मॉडल ही होगा, लेकिन जो ओपन फेसेस है अगर वो भी आप क्लोज करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन एज वेल, ठीक है ना। सो कैप एंड्स का ऑप्शन जो है वो भी एक यूज़फुल ऑप्शन है। बाकी बाज़ औक़ात आपके पास एक सरफेस मॉडल होगा, और उस सरफेस मॉडल को आप एज अ क्लोज एंटिटी अगर शो करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं कैप एंड्स का ऑप्शन यूज़ करते हुए, ठीक है ना। सो दीज आर दोज टू एडिशनल ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन द पीओ, नॉट इन द प्रोई। अदरवाइज बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इट रिमेन्स द सेम। सो अगर अब मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है ना, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट। एंड सिमिलरली वहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक में फिर हम एडिट डेफिनेशन में जाते हैं। यहाँ पे क्रियो में आप सिंपली, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्सट्रूड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप पॉपअप मेन्यू विल अपीयर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एडिट डेफिनेशन का ऑप्शन है, ये एडिट डायमेंशन का ऑप्शन है, ठीक है ना, रेफरेंसेस का ऑप्शन है, ये डिस्प्ले के ऑप्शंस है,
एक्सट्रूड के। सो अगर फॉर एग्जांपल इसको एडिशन जो डेफिनेशन है वो आप एडिट करना चाहते हैं तो यू कैन डू। सो सिंपली click on the extrude and click on the edit definition icon. It will take you back to the definition mode, और फॉर एग्जांपल सरफेस के बजाय एज अ सॉलिड एक्सट्रूजन अगर मैं चाहता हूँ उसको मैं ओके कर दूंगा। नाउ आई हैव अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। एंड सिमिलरली स्केच में एडिट डेफिनेशन में जाके अगर फॉर एग्जांपल इस स्केच को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं सो यू कैन मॉडिफाई दैट। फॉर एग्जांपल 400 में कर दूँ, लेट इट बी 200, and suppose I want to include a circle at certain location also, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है ना। so the resultant extruded object will also be updated, ठीक है ना। so that's it. So in next video we will cover the revolve command inshallah. So okay, see you in the next video inshallah.